So in this video we will going to talk about the role of RB protein in the cell cycle regulation. So let's talk about this. So पहली बात, RB protein आता है from the RB1 gene, and this RB1 gene is the member of RB family. Along with that RB1 gene, this RB family also contain RBL1 gene and RBL2 gene. But our main focus will be RB1 gene. Okay. So first of all, this gene is present on the chromosome number 13 and in the Q1. So यहाँ पर मैंने एक चीज़ लिखा है कि located on chromosome 13q 14.2. So इसको बोलता है कि पहला जो 2 digit है, it is the chromosome number. So it is present in the chromosome number 13. Q means at which arm of the particular chromosome. So it is present on the Q arm. 1 means the which region, and 4 means the band number, and the 2 means the sub band number. So for now, let's remember that RB1 gene is present on chromosome number 13 in the Q1. And RB1 gene is the tumor suppressor gene. Tumor suppressor gene means the gene which prevents cancer formation. How? Because it suppresses the tumor formation. Okay. So now let's think about this. If mutation occurs in that RB1 gene, that is loss of function type, then it will contribute to the tumor formation, and that is what occurs in case of retinoblastoma. Okay, and that is the full form of RB proteins, that is retinoblastoma protein. Okay, so now this RB1 gene via transcription and translation gives us PRB. Okay, and also RB1 gene is the first discovered tumor suppressor gene. Okay, so now this PRB protein act as a negative regulator of the cell cycle. Okay, and it is a nucleoprotein of 110 kilodalton. RBL1 gene gives us P100 and P107, and RBL2 gene gives us P130 proteins, although they are not relevant now. So here I have made a mistake that it will be not many other, it will be many other tumors. Okay, now another important thing, that is all the 3 proteins of RB family contains a conserved domain. मतलब all the 3 proteins जो आ रहा है from the genes of RB family, they all contain a conserved domain known as pocket. Okay, and this pocket domain can interact with LXCXE motif present in viral proteins. Okay, and that is why this protein family is also known as pocket protein family. Okay, and ये चीज़ ही reason है why various kind of virus infection facilitates cancer formation. Okay, क्योंकि RB protein family already लेकर बैठा है a domain that can interact with motifs present in various type of viral protein. Okay, so that is the general thing that a RB family क्या है एंड RB प्रोटीन कहाँ से आ रहा है. अब हम लोग जानेंगे कि कैसे PRB प्रोटीन प्ले ए इम्पॉर्टेंट रोल इन सेल साइकिल रेगुलेशन. ओके, तो चलो देखते हैं. सो मेन बात ये है कि PRB प्रोटीन अपने अनफॉस्फोराइलेटेड और हाइपोफॉस्फोराइलेटेड स्टेट में ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर E2F को DNA बाइंडिंग प्रोटीन के साथ इंटरैक्ट करने नहीं देता. अब तुम बोलोगे कि इससे क्या फ़ायदा होगा. सो याद रखना, E2F इज़ द ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर. ओके, सो E2F को अगर PRB ने काम करने नहीं दिया, सो इट विल प्रिवेंट ट्रांसक्रिप्शन ऑफ मेनी इम्पॉर्टेंट जीन्स. ओके, एंड याद रखना E2F अगर DP के साथ इंटरैक्ट कर पाए, सो दैट अगर E2F DP के साथ इंटरैक्ट कर पाए, so due to this interaction there will be production of various type of protein
that will promote G1 to S ट्रांजिशन. ओके, सो इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए पीआरबी प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल है. ओके, एंड एक चीज़ इम्पॉर्टेंट चीज़ और एक है कि इसका परमानेंट प्रिवेंशन इनिबिशन हमें नहीं चाहिए, राइट. हमें एक चीज़ कभी भी नहीं चाहिए कि पीआरबी E2F को हमेशा के लिए रोक के रखे, क्योंकि सेल साइकिल का रेगुलेशन का फंडा क्या है. सेल साइकिल का जो भी रेगुलेटरी मैकेनिज्म है वो एक पर्टिकुलर सेल को सेल साइकिल के दूसरे फेज में जाने से तब तक रोकेगा जब तक सेलुलर मशीनरी ये चीज़ कन्फर्म ना कर ले कि दैट पर्टिकुलर सेल हैव completed all the processes in the previous phase accurately, right. जब सेल का जो मशीनरी है वो समझ जाएगा कि सेल ने पहले वाले फेज में जो जो काम था एकदम ठीक ठाक किया है, तो वी हैव टू inhibit that regulatory mechanism, right, so that cell can move into the next phase of the cell cycle, right. So it is also important to know that PRB inhibition is not permanent. So अब ये चीज़ हमें जानना होगा कि कैसे PRB इनिबिशन को रोका जाता है, राइट. सो यहाँ पर ही आ जाता है सेल साइकिल का दो इम्पोर्टेंट जिगरा दोस्त, साइक्लिन CDK. ओके, सो पहले जो आता है वो है साइक्लिन टाइप डी, जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है विथ CDK टाइप 4 और 6. ओके, यहाँ पर एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, सेल में साइक्लिन डी का जो लेवल है वो इंक्रीज होता है ड्यू टू एक्स्ट्रा सेलुलर माइटोजेनिक फैक्टर और सिग्नल. ओके, सो एक्स्ट्रा सेलुलर जो सिग्नल है, माइटोजेनिक सिग्नल और फैक्टर, they will increase the cyclin D level. Okay, so that cyclin D form complex with CDK4 or 6 and facilitates the hypophosphorylation of PRB. Okay, and this is going on during the early and mid G1 phase. Okay, so now जब मैंने आपको सेल साइकिल चेक पॉइंट करवाया था तब मैंने एक चीज़ बोला था कि इन केस ऑफ मैमल द G1 phase सेल साइकिल चेक पॉइंट इज नोन एज रेस्ट्रिक्शन पॉइंट. आपको याद होगा, राइट. सो रेस्ट्रिक्शन पॉइंट को कैसे पता चलता है कि ऑल द एक्स्ट्रा सेलुलर माइटोजेनिक फैक्टर्स और सिग्नल्स आर इंडिकेटिंग दैट येस एवरीथिंग इज गोइंग ऑल राइट. रेस्ट्रिक्शन पॉइंट को ये चीज़ पता चलता है बाय द हाइपोफॉस्फोराइलेटेड फॉर्म ऑफ PRB. ओके, जब रेस्ट्रिक्शन पॉइंट ये चीज़ देखता है कि PRB हाइपोफॉस्फोराइलेटेड कंडीशन पे है, वो समझ जाता है कि दिस इज ड्यू टू एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल्स और एक्स्ट्रा सेलुलर माइटोजेनिक फैक्टर्स. ओके, तभी रेस्ट्रिक्शन पॉइंट उस पर्टिकुलर सेल को अलाउ करता है टू मूव टू द लेट G1 फेज. क्योंकि याद रखना, रेस्ट्रिक्शन पॉइंट इज द पॉइंट वेयर सेल कमिट्स टू डू द रेस्ट ऑफ द सेल साइकिल, otherwise it will remain in the G1 phase and then it may also enter in the G0 phase, right. So restriction point is very important and restriction point वो सब सेल को ही जाने देता है जिसमें जब restriction point देखता है कि PRB is in hypophosphorylation condition. okay, and now जब सेल ऑलरेडी लेट G1 phase में चला आ चुका है तब there will be a dramatic increase of cyclin E. Okay, that will form a complex with CDK2. Okay, तो याद रखना अर्ली एंड मिड G1 फेज में कौन थे, साइक्लिन डी विथ CDK टाइप 4 और 6, एंड यहाँ पर कौन है, साइक्लिन E विथ CDK टाइप 2. ओके, सो नाउ ये आके क्या करेगा, PRB को टोटली फॉस्फोराइलेटेड कर देगा एंड इसको हम बोलते हैं हाइपर फॉस्फोराइलेटेड कंडीशन. ओके, एंड दिस हाइपर फॉस्फोराइलेटेड कंडीशन याद रखना इज ए इनएक्टिव कंडीशन. ओके, एंड एज ए रिजल्ट PRB कैन नो लॉन्गर प्रिवेंट E2F. ओके, एंड E2F विल गोइंग टू dimerize with DP, that is DNA binding protein, and it will induce the expression of all the genes whose product is important for the preparation of the cell to enter into the S phase. So that is the idea. Okay,
सो ना यहाँ पर एक चीज़ मैंने बोलना आपको भूल गया कि मैंने आपको बोला कि साइक्लिन डी का जो लेवल है वो इंक्रीज होता है वाया एक्स्ट्रा सेलुलर माइटोजेनिक सिग्नल। सो ये चीज़ को स्टडी किया जाता है वाया रैस रैप एमएपी के बाद पे। सो ये चीज़ उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सो नाउ देयर आर वेरियस सेल साइकिल इनहिबिटर्स आर ऑल्सो प्रेजेंट। ओके, सो मैंने आपको आई एन के सी के आई inhibitory kinase of CDK4 for an example CI और CIP KIP CKI family इन लोगों के बारे में बताया था, राइट। सो आई एन के सी के आई हेयर विल गोइंग टू इनिबिट CDK4 और 6। ओके, ऑन द अदर हैंड CIP KIP साइक्लिन टाइप ई एंड साइक्लिन टाइप डी दोनों के साथ ही बाइंड करके इनिबिट कर सकता है। ओके, I hope you remember the example of INK P15, P16, P18, P19 and also the example of CIP, KIP, P21, P27 and P57, right? So INK इनहिबिट करता है CDK4 और 6 को, मतलब कि साइक्लिन डी और CDK4 और 6 को, and CIP and KIP will going to inhibit cyclin D CDK और cyclin E CDK. Okay, so that is the thing. So ये चीज़ से एक चीज़ तो क्लियर है कि PRB is acting like a guardian of cell during the G1 to S phase transition, right? And कोई भी mutation in PRB can be dangerous for cell, right? क्योंकि G1 से S में जाने के लिए सेल के पास कोई भी रेगुलेशन मौजूद नहीं होगा, राइट। सो दैट में कॉज मैलिग्नेंट सिचुएशन। ओके, सो फंक्शनली PRB प्रोटीन कैन ऑल्सो बी इनहिबिटेड बाय म्यूटेशंस एज वेल एज वायरल इन्फेक्शन, क्योंकि हमने पॉकेट डोमेन के बारे में बात किया था, राइट। सो दैट इज़ व्हाट एग्जैक्टली गोइंग ऑन इन केस ऑफ ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ओके, क्योंकि वायरल E7 oncoprotein can bind with those PRBs, okay, and that is what we see in case of cervical carcinomas, okay, along with that retinoblastoma, small cell lung carcinomas, along with that osteosarcomas are all the things that is due to the mutation in PRB protein, okay. So you can understand how important PRB प्रोटीन is it, राइट। सो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू दिस क्लास।